Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to International Islamic University, Islamabad School's Sahiwal Campus online lectures. This is the lecture of Quranic for grade 6. Dear students, as this is the first lecture given to you online from this agenda, so we will begin with the lesson number 10A, which is Suratul Ikhlas. Dear students, in this lecture, we are going to recite the surah. We will learn the translation of the surah word by word and verse by verse. I will give you the explanation. I will elaborate the translation and explanation of this surah given in your Quranic textbook. So, we are going to begin with Suratul Ikhlas. So, you are required to bring your Quranic textbook, your notebook and your complete stationery with you, because I will give you some notes to be written in your notebook as your classwork of today. Those notes will be helpful for you people. So listen to the lecture attentively and write down everything that I will ask you to write down. I hope you got what I want you to do. Suratul Ikhlas. First of all, let's see that what is described in the surah, what is the theme of this surah. This surah is very small but still sufficient in its theme and is very important. This is a small but very important surah. When we recite this surah in the salah, do not do so just because it is a small surah, but keep in mind its significance and importance also. नमाज में हम सूरह इखलास जब पढ़ते हैं तो उसका पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि ये छोटी सूरा है और कम टाइम लगेगा और हम जल्दी जल्दी अपनी नमाज एंड करेंगे. नहीं, उसका पर्पस ये होना चाहिए कि ये सूरा अपने थीम में कंप्लीट है, अपने कॉन्सेप्ट में कंप्लीट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है, हम इसलिए ये पढ़ रहे हैं. सेकेंडली, द वेरी big point, very important point of this surah is that it is equivalent to 1/3 of the whole Quran, because 1/3 Quran is Quran deals with the subject that is covered in this surah, which is Tawheed, which means the oneness of Allah. Dear students, कुरान मजीद का जो 1/3 पार्ट है उसमें जो सब्जेक्ट डिस्क्राइब्ड है, जो थीम है वो क्या है? तौहीद, वननेस ऑफ अल्लाह. और ये सूरा कम्प्लीटली वननेस ऑफ अल्लाह को डिफ़ाइन करती है और बताती है कि अल्लाह पाक अपनी किन किन सिफ़ात में वन है, वाहद है और उसकी तौहीद ज़ाहिर होती है. सो ये सूरा कुरान मजीद के 1/3 कॉन्सेप्ट को कवर करती है, इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज़ इक्विवेलेंट टू 1/3 ऑफ द कुरान. नेक्स्ट, इट हैज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट. It answers the most fundamental questions like who should we worship and why. It is the sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam to recite this surah once after every obligatory prayer and thrice after Fajr and Maghrib prayer. And another thing that is very important to discuss is that one of the companions of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to recite Surah Ikhlas फॉलोड बाय सम अदर सूरा इन एवरी रका ऑफ सलाह. और जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप नमाज की हर रकात में एक और सूरा के साथ सूरा इखलास ही क्यों पढ़ते हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि आई लव्ड इट वेरी मच. तो फिर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपकी ये जो मोहब्बत है इस सूरा के साथ, दिस हैज़ मेड यू एंटर जन्ना. आपकी इस हैबिट की वजह से, इस सूरा के साथ इस प्यार की वजह से, आपकी ये जो हैबिट है कि आप हर सूरा के हर रकात में एक और सूरा के साथ सूरा इखलास पढ़ते हैं और आप इसलिए पढ़ते हैं कि आप इससे प्यार करते हैं, तो इस प्यार की वजह से आपने जन्नत में अपना रास्ता बना लिया है. सो यू कैन इमेजिन दैट हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज़ एंड हाउ मच सिग्निफिकेंट दिस सूरा इज़ एंड इट्स टॉपिक इज़. सो नाउ आई विल मूव टूवर्ड्स द recitation and translation. First of all, just pause the video all of you and please recite Surah Ikhlas. Jazakallah. Qul huwallahu ahad. Qul means say. This is an order word. जिस तरह आपके इंग्लिश में सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ऑर्डर्स गिवन होते हैं, जिनका
स्टार्ट जो है वो वर्ब से होता है. फॉर एग्जाम्पल शट द डोर, इस सेंटेंस में वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई ऑर्डर गिवन है. ये कुल, ये भी ऑर्डर दिया जा रहा है कि कह दें. ये इस तरह से बहुत सारी आयात और बहुत सारी सूरा का स्टार्ट होता है कुरान पाक में. हुआ, ही इज़, अल्लाहु, अल्लाह, अहदुन, वन, द ओनली वन. कुल हुवल्लाहु अहद, say that he is Allah who is the only one. Allah is only one and alone in his attributes, in his entity. He is alone in his all the attributes. He is alone in his rights. He is alone in his powers. He has no partner or relative or son or father or any other companion, etc. He has no one else has knowledge of the unseen. No one can hear, help or say the way Allah does. जिस तरह से अल्लाह पाक की ये खसूसियत है कि ही इज़ ऑल नोइंग, ही इज़ ऑल हियरिंग, ही इज़ ऑल सीइंग. कोई और भी इस पूरी यूनिवर्स में कोई थिंग या कोई पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है जिसमें ये वाली खसूसियात हों. ही इज़ अलोन, ही अलोन हैज़ द राइट टू बी वर्शिप्ड. He alone has the right to declare something lawful or unlawful, permissible or impermissible. जिन चीज़ों को, जिन बातों को, जिन मामलात को अल्लाह पाक ने डिफ़ाइन कर दिया है, उनकी लिमिटेशंस, उनके बिहाइंड, उनसे अबव जाके कोई भी उनको चेंज नहीं कर सकता. कोई भी ये नहीं डिफ़ाइन कर सकता कि क्या लॉफुल है और क्या अनलॉफुल है, क्या परमिसिबल है और क्या परमिसिबल नहीं है. जबकि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगाम में, अपने लास्ट फाइनल मैसेज में ये सारी चीज़ें, ये सब डिफ़ाइन कर दिया है, सारी लिमिटेशंस डिफ़ाइन कर दी हैं. तो उसके बाद किसी को भी ये, नो वन कैन डेयर टू चेंज दिस. सो ही इज़ अलोन इन हिज पावर्स. when we recite this surah and we look into its theme that it describes his tawheed, the first ayah describes his tawheed, that he is one and only, then what should we ask from him? We should ask from him that, oh Allah, help me worship you alone. कहीं मुझे कोई कभी ज़िंदगी में कोई ऐसी तौफीक ना हो कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और की इबादत की तरफ या किसी और को प्रायोरिटाइज़ करूँ. हमें अल्लाह से क्या दुआ करनी चाहिए? ओ अल्लाह, हेल्प मी worship you alone. Then we should evaluate ourselves. Evaluate on the basis of what? That on the basis of according to Quran's teachings, on the basis of against shaitan, and give the reasons what are we doing. How many times have we yielded to our desires? According to the Quran's following, one's own desires amount to taking it as a God. How many times did I thought to worship of शैतान? ऐसा नहीं है कि आप सोच के ये करेंगे कि मैं अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करूँ, नाउज़ुबिल्लाह. ऐसा नहीं होता. ये आपकी डीड्स, ये आपकी हैबिट्स, ये आपकी रूटीन वर्क्स डिफ़ाइन करते हैं कि आप किस चीज़ को या किस पर्सनैलिटी को या किन लॉज़ को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं. अगर आप अल्लाह ताला की बनाई हुई हदूद, आप नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन आप अल्लाह ताला की बनाई हुई, अल्लाह ताला की डिफ़ाइन की हुई लिमिटेशन से बियॉन्ड जाते हैं, तो इट मीन्स आप ये इस बात को निगेट कर रहे हैं ना कि यानी कि अगर आप अल्लाह पाक की लिमिटेशंस को क्रॉस करते हैं तो ये उसकी निगेशन है, उसके बनाए हुए लॉज की निगेशन है. इट इज़ जस्ट लाइक सेम वर्शिपिंग शैतान. सो वी शुड आस्क हिम टू हेल्प ourselves worship alone him. Okay, according to the Quran's following, shaitan is like worshipping him. Why did I listen to him? Was it because of bad company or because of greed, indulgence, materialism, approach in life, lack of discrimination between right and wrong? अगर कोई बंदा अल्लाह पाक की बताई हुई लिमिटेशन से बियॉन्ड जाता है तो उसकी रीज़न क्या हो सकती है? ऑफ कोर्स उसकी रीज़न सिर्फ ये हो सकती है, हमारी वर्ल्डली जो बेनिफिट्स हैं, वर्ल्डली बेनिफिट्स और आपको पता है ये वर्ल्डली बेनिफिट्स, आपकी जो छोटे छोटे से ख्वाहिशात दुनियावी, ये सब टेम्प्रेरी है और फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड. इट इज़ नॉट परमानेंट, इट इज़ फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, टेम्परेरीली. सो वी शुड plan to remove the evil out of our lives so that we can worship Allah alone, like live according to his commandments alone.
Next, we should propagate the word of Allah. This verse starts with qul. आपने देखा कि ये वर्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है? qul, से. So it means that when we understand it, when we have faith in it, when we have belief in it and we understand it completely, then we should say it to other people, of course. जब आप एक चीज़ पे ईमान ले आते हैं और आपको पता है कि यही राइट है, तो फिर आपकी ये ड्यूटी बन जाती है. आवर ड्यूटी इज़ दिस टू प्रीच द कॉन्सेप्ट दैट वी बिलीव. अब हमें ये पता चल गया है कि अल्लाह इज़ द ओनली वन, तो हमारी ड्यूटी क्या है कि हम इसको प्रीच भी करें. यही वजह है कि इस सूरा का स्टार्ट कहाँ से होता है? से, कि से टू अदर पीपल. ओके, we must propagate the message of Islam to others with wisdom and kindness, the way Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam did. Use this surah to spread the message of Tawheed, the oneness of Allah. Dear students, I gave you the elaboration of explanation and translation of the first ayah. So pause the video and write down the things you can see on the screen. Write down all these things. These are notes for you, and these notes will help you writing theme of this surah. These notes will help you memorizing things. These notes will help you finding the answers of the questions given in the assessment at the end of this lesson. So please pause the video and write the things in your notebook by preparing your classwork page on your notebook. How do you prepare your classwork page? You prepare it by writing date and day on the top, and then you write topic and then move towards the writing. And don't forget to prepare the index. Okay, have you done? That's fine. Now let's move towards the second ayat, which is Allahu Samad. Allahu, Allah. As-Samad, the self-sufficient. Dear students, हमने ऑलरेडी पढ़ा, जब हम सूरा फातिहा पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला के बहुत सारे नाम हैं और उस सूरत में भी हमें अल्लाह ताला के बहुत सारे नाम मिले. वो सब नाम क्या हैं? वो अल्लाह ताला की एट्रीब्यूट्स हैं, वो उसकी खुसूसियात हैं, वो उसकी तारीफ़ें हैं कि अल्लाह अर्रहमान है, अल्लाह रहीम है, रहम करने वाला है, वो बॉन्टीफुल है, वो मर्सीफुल है, वो काइंड है, वो फॉरगिविंग है. लेकिन ये जो वर्ड अल्लाह है, इट इज़ हिज रियल नेम, इट इज़ द नेम ऑफ हिम. ये उसकी कोई एट्रीब्यूट नहीं है बल्कि ये उसका नेम है. सो दिस वर्ड इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट to call him Allah. As-Samad means self-sufficient. What does this mean? इसके लिए उर्दू में वर्ड यूज़ होता है बेनियाज, यानी कि वो दुनिया से बेनियाज है, वो लोगों से बेनियाज है, वो मामलात से बेनियाज है. हम क्या करते हैं, हम क्या नहीं करते, वो उन मामलात से बेनियाज है. इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ही इज़ self-sufficient in himself. It means that everyone needs him and he needs no one. उसे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि कोई उसकी इबादत करे या ना करे. वो सिर्फ अपने बंदों को उसकी बेस पे जज़ा या सज़ा देगा. इससे उसकी ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. Recite this verse keeping in mind the fact that everyone needs him and he needs no one. Realize that there are billions of creations including human beings that are alive because of his mercy, his kindness and his continuous support. Can you imagine that how much sins we do in our routine life, and still we are under his kindness, under his mercy, under his continuous support. Why is this so? Because he is self-sufficient. वो बेनियाज है हमारे सारे हरकत से, हमारे सारे कामों से. हम उसके लिए कुछ करते हैं, हम उसके हकूक़ पूरे करते हैं या नहीं करते, इससे हमें फ़र्क पड़ता है. अल्लाह पाक की ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. He is as-Samad. We can also pray to Allah. जब हम ये समझ जाते हैं कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात में क्या है, सेल्फ सफिशेंट है, बेनियाज है, तो फिर हमें उससे प्रेयर क्या करनी चाहिए? यू अलोन हैव बीन फुलफिलिंग माई नीड्स इन द पास्ट, सो प्लीज़ कंटिन्यू टू फुलफिल देम इन द फ्यूचर ऑल्सो. ओ अल्लाह, मेक मी डिपेंडेंट अपॉन यू अलोन एंड नॉट अपॉन एनी वन एल्स. कि मुझे कभी भी किसी दूसरे के आगे झुकना नहीं पड़े. या अल्लाह मुझे ऐसा बना और मुझे ऐसी तौफीक दे कि मैं सिर्फ तेरे ही आगे डिपेंडेंट हूँ. Come to the third ayat, which is Lam Yalid Walam Yulad. Lam means he did not. Yalid gave birth to. Walam and neither. Yulad is he begotten. यानी कि ना तो वो किसी का
बाप है ना वो किसी का बेटा है. He did neither beget and nor he is begotten. ना वो किसी का फादर है ना वो किसी का सन है. While reciting this ayah, we should feel the responsibility of conveying this message to over 2 billion Christians who wrongly believe that Jesus is the son of Allah. Dear students, do you know that Christians believe that Jesus, Hazrat Isa alayhi salam, is the son of Allah. This is a wrong belief which is self-created by some people and is spread over the all the Christians and they believe it. हालांकि ये ट्रू नहीं है. अल्लाह पाक ने अपने फाइनल मैसेज में ये बात क्लियर कर दी, लम यलिद व लम युलद, कि वो ना तो किसी का बाप है ना किसी का बेटा है. तो जब हम ये बात पढ़ते हैं और हम ये बात समझते हैं, हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि अल्लाह ताला ने खुद अपने बारे में बताया है कि वो नहीं है किसी का बाप और किसी का बेटा नहीं है, तो फिर जो लोग इस चीज़ को समझते हैं कि कोई उनका बेटा है, उन लोगों को हमें बताना चाहिए. जब हम ये बात मान जाते हैं तो फिर हमारी अगली ड्यूटी ये है कि हम इस मैसेज को प्रीच भी करें, प्रोपेगेट द मैसेज ऑफ अल्लाह. Why do we have children? Why do human beings have children? Why do we need? Because when we are tired or feel lonely, they cheer up. Does Allah need anyone to cheer him up? No. Why? Why doesn't he need anyone to cheer him up, to take care of him, or to take his ambitions and to fulfill his dreams? Why don't he need? Because he is a samad. ही इज़ सेल्फ सफिशेंट. उसे किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई उसका ख्याल रखे, या ना कभी उसने बूढ़ा होना है कि कोई उसका उसके ज़ोफ़ के दिनों में, उसके बुढ़ापे में उसका सहारा बने. उसको ज़रूरत ही नहीं है, वो इन चीज़ों से बेनियाज है. ही इज़ सेल्फ सफिशेंट. व्हेन वी ग्रो ओल्ड, दे आर चिल्ड्रन टेक केयर ऑफ अस. व्हेन वी डाई, दे कंटिन्यू विद आर प्लान्स एंड आर एम्बिशंस. अब अल्लाह ताला एक ऐसी ज़ात है जो हमेशा से है और हमेशा कायम रहेगी, तो उसे किसी की ज़रूरत नहीं है जो उसके बाद उसके एम्बिशंस, उसके प्लान्स को लेके चले. ये ज़रूरत इंसान की होती है, अल्लाह ताला की नहीं है, क्योंकि वो तो बेनियाज है इन चीज़ों से. उसने तो हमेशा कायम रहना है. अल्लाह इज़ फ्री फ्रॉम ऑल सच वीकनेसेस एंड नीड्स. ट्राई टू गो बैक थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस ऑफ द ईयर्स इन टाइम एंड थिंक ही वॉज ऑलवेज देयर. डू सो फॉर फ्यूचर एंड ही विल ऑलवेज बी देयर. आप कभी सोच सकते हैं कि ये फॉर एवर का यहाँ क्या मतलब है, कब से शुरू हुआ होगा और कब एंड होगा. इंसान की अकल ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस बात की हमें समझ नहीं आती कि कब से और कब तक. और ये एग्जिस्टेंस किसकी है? सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात की है. नोट डाउन दीज पॉइंट्स इन योर नोटबुक. हैव यू डन? Okay, now let's come to the last ayat from this surah, which is walam yakun lahu kufuwan ahad. Wa and lam, not, yakun is, lahu unto him, kufuwan comparable, ahadan anyone, कोई भी कंपेरेबल नहीं है उससे. एंड हेयर देयर इज़ नन कंपेरेबल इन टू हिम. नोबडी इज़ इक्वल और कंपेरेबल टू अल्लाह इन हिज एंटिटी, हिज एट्रीब्यूट्स, हिज राइट्स, हिज पावर्स. ट्राई टू इमेजिन द vastness of this universe, billions and billions of light years wide, and no one is in control except Allah, the only creator. Now what should we ask in dua? We should ask, Oh Allah, help me develop strong faith that you are enough for me and in all matters of life. And then we should evaluate that, do I remember this aspect when I am in presence of powerful people? Is there anybody who I am afraid of? Do I expect something else to benefit me? जब हम अपनी वर्ल्डली डिज़ायर्स के पीछे जाते हैं और समटाइम्स हमें ये फील होता है. We already have discussed this topic in our classwork when we were reciting Surah Asr. Surah Al-Asr. I was explaining and elaborating you Surah Asr, and we discussed this topic that sometimes we don't deliberately do this, but we really do this, that we cross the limitations defined by Allah in his final message, and just to
find our worldly benefits and to have our worldly desires and to complete our worldly desires, we should remember this thing that he is the only one and he is not comparable. Do you remember to think someone comparable to him or equal to him, what does this concept mean? Do you remember? Yes, this concept is called shirk, and shirk is the biggest sin. You have already learned this, that shirk is the biggest sin. So हमें अपने नॉर्मल रूटीन्स में जब हम अपनी छोटी छोटी डिज़ायर्स की वजह से अपनी अपनी वर्डली डिज़ायर्स की वजह से अल्लाह ताला की लिमिटेशंस को क्रॉस करते हैं, तो इट मीन्स कि हम उन डिज़ायर्स को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं. तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बुद्ध की ही बुद्ध को ही वर्शिप करें तो वो ही शिरक होगा. नो, अगर आप अपनी वर्डली डिज़ायर्स, अगर आप अपनी दिली जो दुनियावी टेम्परेरी डिज़ायर्स होती हैं उनके लिए भी अल्लाह पाक की लिमिटेशंस को क्रॉस करते हैं, तो इट मीन्स कि आप शिरक कर रहे हैं ऑफ कोर्स, नाउज़ुबिल्लाह. और हमें इससे बचना चाहिए, हमें इससे बचने के लिए दुआ करनी चाहिए और फिर एवेल्यूएट करना चाहिए कि मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और मैं किसी से नहीं डरता, किसी दुनियावी नुकसान से नहीं डरता, और मेरे लिए फ़ायदा क्या है, सिर्फ ये फ़ायदा है जो मेरे लिए परमानेंट फ़ायदेमंद जो चीज़ पहुँचाए, ना कि टेम्प्रेरी वर्डली बेनिफिट. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड what I explained you. Now the question is that how can we develop the love for this surah? The answer for this question you can find on the page number 38 of your Quranic textbook. Now let's discuss our today's homework, which is the questions from assessment of the this unit on page number 39 of textbook, which the questions are given to you at the end of this lesson. Please open page number 39. First question is, what is the most fundamental question that this surah answers? Of this question you can find the answer in the first paragraph on page number 37, and it is your task to find the exact answer. This answer will be answer of all these questions will be of 2 to 3 lines. Second question is, when should we recite this surah? We should recite this surah in salah. We should recite this surah whenever we find ourselves alone or when we find ourselves जब हमें ये लगने लगे कि हमें जो वर्डली डिज़ायर्स हैं वो हमारे ऊपर डोमिनेंट हो रही हैं, और शायद हम अपने जो हमारा सिरात मुस्तकीम है उसे हमने क्या पढ़ा था, द राइटियस पार्ट, उससे अगर हम हट रहे हैं तो उस टाइम पे भी हमें ये सूरह रिसाइट करनी चाहिए, क्यों, ताकि हमारा जो फेथ है वो रिन्यू हो. नेम द 4 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अल्लाह's वननेस मेंशन्ड इन दिस लेसन. क्या क्या एस्पेक्ट्स यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं? ही इज़ द ओनली वन, ही इज़ सेल्फ सफिशेंट, he is neither beget and nor he is begotten, and he is uncomparable. Now you will write the answer of this question into 2 to 3 lines. Again, another question is that what is the meaning of this word as-samad? We have discussed in very long detail that what does as-samad mean. Next is, what is the message that we should convey to over 2 billion Christians? We have discussed this. It is mentioned in this lesson that a companion of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to recite this surah in every salah, in every rakat, in every namaz. Why? And by doing so, what did he earn? 7th question is, what is the meaning of Tawheed? And 8th question is, okay, now I am going to give you an activity which is given on page number 39, and the activity is to recite 99 names of Allah. I am going to give you a tip that listen Allah's 99 names thrice a day. अगर आप दिन में 3 दफ़ा अल्लाह ताला की, अगर आप YouTube पे जाएं, आप अल्लाह ताला की 99 नेम्स सर्च करें, आपको वीडियो में ऑडियो में मिलेंगे, आप दिन में 3 दफ़ा सुने. लिसन Allah's 99 names thrice a day, and those will be learnt in a week, inshallah. This is an activity for you, and all the questions given in the assessment here
including question number 8 also. It is said that this surah equals the 1/3 of Quran. What does this mean? I have explained you. You will write all the answers of these all questions in your notebook, um, and the answer of for every question will be from 2 to 3 lines. So this is the end of today's lecture. Good luck, dear students. Allah Hafiz.